My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing number of functions. And before we start the session, if you're liking the content and you've not yet subscribed to the YouTube channel, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon to receive the regular updates. You can also join Telegram channel or WhatsApp channel, that is Mathological, or can message me on Telegram at adityakt for any questions or queries regarding your preparation. So, agenda of this video is that we'll be discussing number of functions. If a function is defined from a set A to set B, then we'll be discussing how many total number of functions are possible. Total number of functions can be onto or into, can be injective functions. Okay, so basically total number of functions possible. And then we'll be doing number of one-on-one functions, which are injective functions. Okay. Third, number of one-one and onto functions. Which is number of bijective functions. And last but not the least, number of onto functions. Very important. Number of onto functions. So this is our agenda for this session. Start karte hain. And let's take the first question. First question is, if there are two sets A and B such that number of elements in set A is equal to 3, number of elements in set B is equal to 5, then we have to find out total number of possible functions defined from set A to set B. Pause the video and try to solve it. Very simple question. अगर तुम्हें function का definition clear हुआ है तो definitely this can be solved very easily. So part A is saying that find total number of functions from A to B. So if a function is defined from set A to set B, how many such functions will be possible if number of elements in set A is equal to 3? Let us say those elements are 1, 2 and 3. And number of elements in set B that is equal to 5. Let us say those are 1, 2, 3, 4, 5. So for any function, हमें क्या चाहिए? There must be an output for element 1 in set A. There must be an output for element 2 in set A, and there must be an output for element 3 in set A, isn't it so? अब element 1 के लिए output की choices कितनी है? There are 5 choices, either 1 or 2 or 3 or 4 or 5. तो 5 choices are there for F1, 5 choices are there for F2, 5 choices are there for F3. So 5 choices each for F1, F2 and F3, isn't it so? For each we have 5 choices. So total number of ways will be 5 into 5 into 5, which is equal to 125 such functions will be possible. ठीक है, 125 such functions will be possible. Is that clear? और अगर इसी बात को जनरलाइज करें, so if we have number of elements in set A is equal to NA, number of elements in set B is equal to NB, so for every element in the set of domain, we have choices equal to number of elements in set B. Isn't it so? For every element part of the domain, in the set of the domain, we have total choices equal to number of elements in O domain. ठीक है? So total functions will be NB into NB into NB. How many times? जितने की number of elements हैं set A में, यानी कि NA times. So our answer will be number of elements in set B to the power number of elements in set A. Okay? या फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to m, number of elements in set B is equal to n, तो for each element in set A there are n choices, so our number of functions will be n to the power m. This will be our answer, n to the power m, if number of elements in set A is equal to m and number of elements in set B that is equal to n. तो पार्ट ए तो क्लियर हो गया, हमारा 125 आंसर होगा. पार्ट बी का आंसर क्या होगा? बिकॉज इन पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में वी हैव टू फाइंड आउट फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए. सेट बी से सेट ए में कितने फंक्शंस होंगे? तो सेट बी में देयर आर 5 एलिमेंट्स, सेट ए में देयर आर 3 एलिमेंट्स. सो फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, वी हैव 3 चॉइसेस. सो आवर आंसर इन दिस केस विल बी 3 to the power 5, which is equal to 243 functions are possible. Is that absolutely clear?
ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, next is there are two sets A and B such that number of elements in set A is equal to 3, number of elements in set B is equal to 5, and we have to find out total number of one-to-one functions from set A to set B. Number of one-to-one functions from set A to set B. So how many such functions will be possible? One-one functions basically, part A. And functions are defined from set A to set B. Set A mein elements are 3, set B mein elements are 5. Again, let us say elements are A1, A2, A3, three elements in set A. And set B में elements are 5, B1, B2, B3, B4, B5. So since we need one functions, तो definitely FA1 के लिए number of choices कितनी है? We have 5 choices, either B1 or B2 or B3 or B4 or B5. There are 5 choices. 5 में से कोई एक select कर लेंगे. Let us say we connected A1 with B2. So once we've connected A1 with B2, since we need one-to-one functions, तो क्या अलाउड नहीं है कि डेफिनेटली अब B2 से कोई और एलिमेंट डोमेन का कनेक्ट नहीं हो पाएगा. Isn't it so? Now this will not be allowed that A2 can be connected to B2. This will be a problem because now the function will not be 1 1. Okay, so this is not allowed. So once we have connected one element of codomain with one element of domain, now that element is eliminated. So for A2, for FA2, we have 4 choices left because B2 तो cancel out हो गया. So 4 choices are there. Now let us say we've connected A2 with B1. So for FA3, we have 3 choices left because ना तो B1 से connect कर सकते हो ना तो B3 से connect कर सकते हो. 3 choices will be there. So total number of functions will be 5 into 4 into 3. This is equal to 60. So 60 functions are possible. 61 functions are possible. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए इतना लिखा. अदरवाइज हम कैसे करते हैं कि फॉर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए we have 5 elements in set B as choices and we need to find out one functions. So for the first element there are 5 choices and one choice is eliminated. So for the next element there will be 4 choices, one more choice is eliminated, and for the next element now there will be 3 choices. So answer will be 5 into 4 into 3, that is equal to 60. That is equal to 60. Clear है? Or basically we had to select first 3 elements out of these given elements and then we have to arrange those 3 for our 3 elements of the domain to make one function. अगर हमें one function बनाना था तो उसके लिए first we'll be selecting, since there are 3 elements in our domain, 3 elements in set A, तो we'll be choosing 3 elements in set B in the codomain for range. Isn't it so? Because our range will be subset of codomain. तो range के लिए we'll be selecting 3 elements because one-to-one function बनाना है. So we need exactly same number of elements in set B as that of set A for a one function to exist. So we'll be selecting 3 elements in 5C3 ways and then we'll be arranging those 3 elements in 3 factorial ways. So 5C3 into 3 factorial, that will be our answer. In the similar way, part B का answer क्या होगा? Total number of one functions defined from B to A. From B to A. Now number of elements set B, that is 5, and number of elements set A, that is equal to 3. So how many such elements will be possible? How many such one functions will be possible? अब हमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स को एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट करना, एग्जैक्टली एक एलिमेंट से ही कनेक्ट करना है. तो क्या ये पॉसिबल है इस केस में? भाई यू मे कनेक्ट वन विद वन, लेट अस से, टू विद टू, लेट अस से, थ्री विद थ्री, लेट अस से, बट दीज टू विल बी लेफ्ट आउट because you cannot connect them with already covered function, already covered elements, because उस केस में वन नहीं रह जाएगा. So that is why in such a case number of one functions from B to A, this will be equal to 0 because this is not possible. Not possible. Because if we need to make a one function, if we need to make a one function, then number of elements in domain, this must be less than or equal to number of elements in codomain. Because only in that case our one function will be possible. When number of elements in domain will be less than or equal to number of elements in codomain, only in this case one function will be possible.
तो वन फंक्शन पॉसिबल होने के लिए कंडीशनलिटी इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। और इन जनरल इफ आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, in such a case number of elements in set A must be number of less than equal to number of elements in set B for a one function to exist. So in this case answer will be 0. Okay, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the number of injective functions from set A to set B if n is equal to 4 and nb is equal to 6. Now injective function is what? One function only. So how many one functions are possible from set A to set B if number of elements in set A is equal to 4, number of elements in set B is equal to 5. So since number of elements in set A, this is less than or equal to number of elements in set B, तो definitely ये condition हमारा satisfy हो रहा है, तो one functions will be possible. And how many functions will be there? So in set A we have 4 elements, in set B we have 6 elements. So out of 6 elements we have to select 4 elements in 6C4 base, and then we'll be arranging the 4 elements connecting with 4 elements of set B in 4 factorial ways. So 6C4 into 4 factorial, that will be equal to 15 into 24, and hence 360. 360 such functions will be possible. क्या ये क्लियर है? ठीक है। या फिर इसी बात को जनरलाइज करें, सो इफ वी हैव a function from A to B and number of elements in set A that is equal to m and number of elements in set B that is equal to n, in such a case total number of one functions, this will be equal to so we have to select m elements out of n elements to be related to m elements of domain. So n cm multiplied by m factorial, this will be our answer. But this is subject to the condition that n must always be greater than or equal to m. n must always be greater than or equal to m. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज दैट मच क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? कमेंट में मेंशन कर लेना कि हाँ ये बात समझ में आ गई और क्लियर हो गया पूरी तरह से। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो भी कमेंट में जरूर मेंशन करना कि ये डाउट तो रहता है। ओके, ठीक है। सो आई बिलीव थिंग्स शुड बी परफेक्टली क्लियर नाउ. Now let us move to the next type of functions, that is bijective functions. So find number of bijective functions from set A to set B if number of elements in set A is equal to 4 and number of elements in set B that is equal to 6. And bijective functions are those functions which are 1 as well as onto. तो हमें बात करनी है 1 as well as onto, 1 and onto. How many such functions will be possible in case of part A? In case of our first case, क्योंकि फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज इक्वल टू 6. तो एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन, इफ वी नीड अ 1 and onto function, in such a case number of elements in set A this must be equal to number of elements in set B. तभी तो 1 और onto हो पाएगा. ठीक है, 1 के लिए कंडीशन हमने देख लिया कि इफ 1 फंक्शन हैज टू बी देयर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. इज दैट इट? सो ठीक है, तो 1 के लिए कंडीशन क्या है? फॉर 1 फंक्शन टू एग्जिस्ट, number of elements in set A must be less than or equal to number of elements in set B if obviously function is defined from set A to set B. For a onto function to exist, if we need an onto function, then the condition should be that number of elements in set A this must be greater than or equal to number of elements in set B. भाई अगर onto function चाहिए तो all elements of the codomain must be covered, isn't it so? All elements of the codomain must be covered. So if number of elements in set A that is less than number of elements in set B, for example हमारे पास number of elements in set A is 1 2 3 4 as given in part A and number of elements in set B is 6. So can we cover all the 6 elements in set B by just 4 elements in set A? क्योंकि फंक्शन में क्या होगा, 1 element will only be related to exactly 1 element, so only 4 can be covered, बाकी 2 तो रह ही जाएंगे. So in any case onto functions will not be possible unless number of elements in set A is greater than equal to number of elements in set B. And if you need both 1 as well as onto, which is a bijective function, so first condition which is number of elements in set A less than equal to set number of elements in set B, as well as second condition, both conditions have to be met out. दोनों तभी पॉसिबल होगा when number of elements in set A is equal to number of elements in set B.
when this is met out. तो clearly फर्स्ट केस में क्या हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. तो इन केस ऑफ पार्ट ए, ऑप्शन ए, not possible. Zero functions will be there. Zero bijective functions will be there because number of elements are not equal. For a bijective function to exist, we need number of elements to be equal in both sets, the set of domain and set of codomain. So since that is not there, तो पार्ट ए में तो आंसर हमारा क्लियरली जीरो है, नॉट पॉसिबल, यानी कि जीरो फंक्शंस आर देयर. और पार्ट बी की बात करते हैं. पार्ट बी में सिंस बोथ आर इक्वल, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा. सो पार्ट बी में वी हैव 4 elements in set A, 4 elements in set B, and we need a 1 1 function, 1 1 and onto function. Let us say elements are 1 2 3 4, and we need a 1 1 and onto function. So for first element there are 4 choices. For first element there are 4 choices. 1 1 भी चाहिए, onto भी चाहिए, यानी कि all the elements of set B must be covered, and all the elements of set A have to be connected to one element each, obviously. ठीक है. So कितने केसेस बनेंगे? For first element there are 4 choices. अब किसी एक से कनेक्ट हो जाएगा तो for the second element there are 3 choices. For the third element there are 2 choices, and for the fourth element there is 1 choice. यानी कि total number of ways will be 4 factor, which is equal to 24. Or in general, if we have to define functions from set A to set B and both sets have n elements each, because obviously when number of elements is same, only in that case bijective functions are possible. So number of bijective functions, this will be equal to n factorial. This will be equal to n factorial in that case. Is that clear? I understood it. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. Next concept, that is number of onto functions. Next question. Number of onto functions from set A to set B. If number of elements in set A is equal to 4 and number of elements in set B is equal to 2, so how many onto functions are possible in such a scenario? कितने onto functions possible होंगे? Pause the video and try to solve it yourself first. So we have defined a function from set A to set B, and that function must be an onto function. And in case of onto function, our codomain is equal to range. Range is not a subset, but range and codomain are equal. So all the elements of that codomain must be covered. Okay? So let us say set B has 2 elements, 1 and 2, and set A has 4 elements, 1 2 3 and 4. So there might be a case when 1 is connected to 1, 2 is connected to 1, 3 is connected to 1, but 4 is connected to 2. So this is a valid function, onto function है clearly. ठीक है. और any other case, कौन से cases को हमें eliminate करना पड़ेगा? When all four elements from set A are connected to exactly one element of set B, those cases have to be eliminated. So total cases, any total functions possible minus those cases when our range is containing exactly one element. Total functions minus when range is containing exactly one element. So either when range is equal to exactly one element, that is 1, और when range is equal to exactly one element, that is 2. तो उन केसेस को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सारे केसेस हमारे काम के होंगे. ठीक है. टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे? सिंस फॉर ईच एलिमेंट देयर आर 2 choices, total elements are 4, total functions will be 2 to the power 4, and minus those cases when range is containing exactly one element. और ऐसे कितने केस बनेंगे? Either range will be containing 1 or range will be containing 2, so only 2 cases. तो 2 to the power 4 minus 2. और ऐसा एक ही में तो पॉसिबल होगा भाई. या तो केस बनेगा हमारा कि f1 as well as f2 as well as f3 as well as f4 and this is equal to 1. This is first case. Or second case will be when f1 as well as f2 as well as f3 as well as f4, this is equal to 2. So 2 such cases will be eliminated. Answer will be 16 minus 2, 14 such functions are possible. 14 onto functions are possible if number of elements in set A is equal to 4 and number of elements in set B that is equal to 2. Simple बात है. Okay, clear है. So if that is understood, अब part B की बात करते हैं, which is slightly more complex. Number of elements in set A is equal to 5 and number of elements in set B that is equal to 3. So how many such onto functions will be there?
कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे हमारे। अब थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। देखो, अगेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी and number of elements are set in set A that are 5. Let us say those are 1, 2, 3, 4 and 5, and number of in set B that is equal to 3. Let us say those are P, Q and R. Okay. So again same logic say we'll be covering up all total functions, total number of functions possible, and then we have to eliminate those cases when range is containing exactly one element, and second case when range is containing exactly two elements, isn't it so? So we'll be removing those cases when range is containing two elements or when range is containing exactly one element. Okay, so minus number of those cases when range is containing two elements. Let us represent that with R2. यानी कि range is containing two elements, and then we'll also be subtracting those cases when range is containing exactly one element. ठीक है, R2 implies range contains exactly two elements. Number of elements in range that is equal to 2, and R1 implies number of elements in range that is equal to 1. तो अगर समझ गए हो तो अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो. टोटल माइनस केसेस व्हेन रेंज इज कंटेनिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स माइनस those cases when range is containing exactly one element. Total functions कितने होंगे? Total functions तो simple है, because for every element of the domain we have three choices and total elements in domain are 5, so 3 to the power 5 will be total number of functions. Minus, now we have to subtract those cases when range is containing exactly two elements. So since range is containing two elements, first of all we have to select those two elements. कि कौन से दो elements range contain करेगी? Range may contain P and Q or P and R or Q and R. Isn't it so? There are three ways to select these two. Okay, so we can say 3C2 ways where we can select those two elements which the range will be containing. Okay, now let us say those two elements are P and Q. So if those two elements are P and Q now, which are part of the range, so for every element in set A, now we have two choices. For this case, two choices हैं, और since there are 5 elements in set A, तो total cases कितने बन जाएंगे अपने? 2 to the power 5. टोटल केसेस विल बी 2 to the power 5. बट यहाँ पे भी एक पंगा फंसेगा. वो पंगा क्या फंसेगा कि देखो ऐसा भी तो केस पॉसिबल हो सकता है. जब हमने 2 to the power 5 बोला तो ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए गेट कनेक्टेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. दैट इज लेट अस से कि सारे के सारे पी से कनेक्ट हो जाए. ये भी तो इंक्लूड होगा इन 2 to the power 5 केसेस में. सिमिलरली सारे के सारे क्यू से कनेक्ट हो जाए, और हमें चाहिए कि रेंज कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स. तो अगर सारे के सारे एक से ही कनेक्ट हो जाएंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विल बी कनेक्टेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट, देन दैट केस विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, because number of elements in the range will be equal to 1 in that case. So those cases should be eliminated, isn't it so? So we'll be subtracting those two cases. One case when they are connected, all connected with P, and one case when they are all connected with Q. So -2. ठीक है, सेम लॉजिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, यही सेम कहानी तो की. ठीक है, सो विल बी सब्ट्रैक्टिंग दोज केसेस. उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो अब हमें मिल गया नंबर ऑफ सच फंक्शंस इन विच रेंज इज प्रिसाइजली इक्वल टू 2. और सब्ट्रैक्ट तो उनको भी करना है जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज इज प्रिसाइजली इक्वल टू 1. उनको भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनको भी फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे कितने मिलने वाले हैं व्हेन रेंज इज प्रिसाइजली इक्वल टू 1. तो सिंस रेंज इज प्रिसाइजली इक्वल टू 1, तो ईदर रेंज विल बी कंटेनिंग ओनली P और ओनली Q और ओनली R. तो कितने वेज होंगे? इन 3C1 वेज वी कैन सेलेक्ट द एलिमेंट इन द रेंज. और एंड सिंस नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव टू बी कनेक्टेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो कितने वेज होंगे? एग्जैक्टली वन ही वे होगा. दिस विल बी आंसर 3 to the power 5 minus 3C2 into 2 to the power 5 minus 2 minus 3C1 into 1. So this will be our answer. 3 to the power 5 कितना आ जाएगा? 243 minus 3C2 यानी 3 into 32 minus 2, तो 3 into 30 minus 3. So 243 minus 93 यानी कि 150 will be total such functions. Our answer will be 150. क्या ये क्लियर है? Answer in this case, this will be equal to 150. 150 will be our answer. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? ओके, इज दिस क्लियर? एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी if number of elements in set A is equal to 5 and number of elements in set B that is equal to 6.
तो कितने ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज इक्वल टू 6. फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए में 5 elements are there, let us say 1 2 3 4 and 5, and set B में number of elements are 6, let us say A B C D E F. So since these functions have to be on to, यानी कि all the elements of codomain should be equal to range. Codomain equal to range, is it possible? Because there are only 5 elements in set A, जबकि set B में 6 elements हैं, तो number of elements in set A is less than number of elements in set B. So is it even possible? Because at max we can connect with 5 elements. एक तो हमेशा ही रह जाएगा. In any case at least one element will be left out. ठीक है, तो at least one will always be left out. So not possible. So not possible. यानी कि number of such onto functions, this will be equal to 0. 0. Because the condition for onto function is that number of elements in set A, this must be greater than or equal to number of elements in set B. Only in that case onto function is possible. But since that is not there, so number of onto functions will be 0. Okay. क्या ये पार्ट क्लियर है? एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड देन ए और बी को रिवर्स कर लेते हैं, तब नंबर ऑफ onto functions कितने आएंगे? If we say that our function is defined from set B to set A and number of elements in set A is equal to 5 and number of elements in set B that is equal to 6. Function is defined from set B to set A and number of elements in set A is equal to 5 and in set B that is equal to 6. Let us say number of elements in set B, 6 elements are 1 2 3 4 5 6 and in set A are A, B, C, D and E. And since we need an onto function, our range will be equal to set A, which is codomain now. Set A is codomain. So range will be equal to A, isn't it so? And range will also be containing all the elements A, B, C, D. We have total 6 elements in our domain, 5 elements in our range. तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? क्या क्या केसेस बन सकते हैं? अब देखो, एक तरीका हुआ कि हम निकालें टोटल फंक्शंस. कितने आएंगे? 5 choices for each of the element in set B. So 5 to the power 6 will be total cases. Minus, we subtract those cases when range contains only 4 elements. Because हमें चाहिए 5 elements. Minus, we subtract those cases when range contains only 3 elements. Minus, we subtract those cases when range contains only 2 elements. And minus, we subtract those cases when range contains exactly 1 element. अब ये बहुत ही cumbersome process हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, this will be a very typical process. ठीक है, next session we'll be discussing a principle, funda and a formula for number of onto functions. But even with that funda, that formula, this question will be cumbersome, highly calculative. ठीक है, so we'll be understanding another concept for such a question. ठीक है, कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं. एक बार पॉज करके अपने पे ट्राई करो कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करें. कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ onto functions फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, और हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 5. तो हाउ शुड वी हैंडल सच अ क्वेश्चन? अब ये प्रोसेस तो देखो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि रेंज 4 को कवर करें, तो फिर देखेंगे कितने वेज में हो सकता है. तो सिंस वी हैव टू सेलेक्ट 4 एलिमेंट्स आउट ऑफ 5, तो 5C4 हो जाएगा यहाँ पे. पहले सेलेक्ट किया, देन 4 टू द पावर 5 केसेस हुए, फिर उनमें से वो केसेस एलिमिनेट करोगे यहाँ पे कि 4 से 6 पहुँचा गाड़ी हमारा. ठीक है, फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस पे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा. तो ये तरीका तो काम नहीं करेगा. व्हाट शुड बी अ बेटर मेथड? What should be a better method in such a case? अब देखो, हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं इन टोटल इन सेट बी, 5 हैं इन टोटल इन सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 1 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. और हमें सारे के सारे 5 को कवर अप करना है. ठीक है, ऑल द 5 शुड बी कवर्ड. तो फॉर श्योर देखो क्या होगा कि ऐसे केसेस में कि लेट से 1 को हम ए से कनेक्ट करें, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, 4 इज रिलेटेड टू डी एंड 5 इज रिलेटेड टू ई. तो 5 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कनेक्टेड टू 1 एलिमेंट ईच इन सेट ए. ठीक है, बट अब जो 6 बचा है, दिस मस्ट बी कनेक्टेड टू वन ऑफ दीज 5. ए बी सी डी में से किसी एक से कनेक्ट होगा. लेट अस से वी कनेक्टेड 6 विद ई. So this is one such possible onto function, isn't it so? So in any such onto function क्या होगा हमारे पास कि सेट बी के
4 of the elements will be connected to one each element in set A, one each element in the codomain, and 2 elements will be connected to exactly one. 4 elements will be connected to one each and 2 elements will be connected with exactly one. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज इफ दैट इज अंडरस्टूड तो इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिस पे. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. So first of all, let us select 5 elements out of 6, 6C5 ways में we can select 5 elements out of 6 that we will be connecting with 5 elements in set A so that we exhaust all the cases. यानी कि on to function पहले हम 5 elements से बना देते हैं, फिर 6 वाले को किसी एक से कनेक्ट कर देंगे. तो 6C5 से we selected first 5 elements, let us say 1, 2, 3, 4 and 5, and then we will be arranging them in 5 factorial ways to be connected with set A. फर्स्ट 5 को हमने ए बी सी डी ई से कनेक्ट कर दिया. 6C5 से वी सेलेक्टेड 5 एलिमेंट्स एंड देन वी कनेक्टेड देम विद 5 एलिमेंट्स इन सेट ए, 5 एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन. ओके, 6C5 into 5 factorial ways. Now ये जो 6th एलिमेंट रिमेनिंग बचा है, that 6th एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू ईदर ऑफ these 5. तो देयर आर 5 ways टू कनेक्ट द 6th एलिमेंट. तो विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 5. अब यहाँ पे जब हमने ये केस किया तो देखो यहाँ पे केस क्या बनेगा. वन केस कुड बी दैट वी सेलेक्टेड 1, 2, 3, 4 and 5 and then we connected them with A, B, C, D, and lastly we connected 6 with E. एक तो केस ही हो गया. ये पहले we selected 1, 2, 3, 4 and 5 then connected them with A, B, C, D, E, then 6 is also connected with it. Or we could have selected 1, 2, 3, 4 and 6 and connected them with A, B, C, D and E, and then लास्ट में 5 को भी E से कनेक्ट कर देते. बट बोथ केसेस आर सेम. तो पहले तुम 6 को सेलेक्ट करो या पहले 5 को सेलेक्ट करो, एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टिंग 5 एंड 6 बोथ विद ई, तो ये दोनों केसेस तो सेम ही बनने वाले हैं. Isn't it so? We'll be dividing by 2 factorial because of this. So 6C5 into 5 factorial into 5 divided by 2 factorial, this will be our answer in this case, which will be 720 into 5 divided by 2, यानी कि 1800 will be our answer. 1800 will be our answer. क्या ये क्लियर है? ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ये तो एक वे हो गया. या सेकंड वे में ऐसे सोच सकते थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ए बी सी डी ई. We know that 4 elements will be connected to one and 2 elements will be connected to one element of codomain. ठीक है, तो पहले हम उन 2 एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लें. पहले उन 2 एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लें विच हैव टू बी कनेक्टेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट. ठीक है, सो 6C2 ways से we can select those 2 elements from these 6 and those 2 elements have to be connected to one element from set A and that element can be selected in 5C1 ways. Let us say we've selected 5 and 6 and 5 and 6 is connected with E. Now we have 4 elements remaining in set B and 4 elements remaining in set A. यानी कि 4 elements remaining in our domain and 4 elements remaining in codomain. So in how many ways we have to connect these 4 elements? Each in 4 factorial ways. Now we can connect these in 4 factorial ways because we have to cover all the elements of the codomain. So 6C2 into 5C1 into 4 factorial, this will be our answer, which is 15 into 5 into 24. That is 75 into 24. ठीक है, which is 1800. तो ऐसे भी सोच सकते हो. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि दिस इज अनदर वे टू थिंक अबाउट इट. एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज करेक्ट, लॉजिक करेक्ट है तो तुम्हारा मेथड तो बदले, फर्क क्या पड़ता है. एज लॉन्ग लॉजिक इज करेक्ट योर कैलकुलेशन विल बी इन द राइट डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इतना ही रखते हैं सेशन में एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आएगा. नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन डिटेल. सो दैट आई केप्ट फॉर नेक्स्ट सेशन. फॉर्मूला तो डायरेक्टली जान ही सकते हैं बट द पॉइंट इज कि एक बार उस लॉजिक को भी समझ जाएंगे तो फिर some questions based on the logic from different topics can also be covered with that understanding. तो इतना ही रखते हैं सेशन में.
एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और अगर फिर भी कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स. दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.